बात कर लेते हैं पाकिस्तान की इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की, जिसमें सबसे पहले आती है इंडस डॉल्फिन। There are only 600 of these magnificent fish left in the Indus River. Their natural habitat has been destroyed because of the barrages built on Indus River, causing lack of water flow and closing down of their habitat. Along with this, pollution and poaching by local people has also drastically reduced their numbers. फिर आती है मार्को पोलो शीप। पाकिस्तान में मार्को पोलो शीप का नेचुरल हैबिटेट कुंजराब नेशनल पार्क है। Their numbers have been dwindling because of poaching and illegal hunting for sports. WWF ने कई प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं फॉर इट्स कॉन्जर्वेशन। फिर एक बर्ड आता है दैट इज हुबारा बस्टर्ड। ये बर्ड पाकिस्तान में सिर्फ विंटर्स में होता है इन चोलिस्तान एंड थर डिजर्ट्स। They travel from colder regions to here to avoid harsh winters. इनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन हंटिंग की वजह से आया है and they have been declared endangered in Pakistan.